So if we talk about tier 2 dependent visas, we need to know who is our dependent, right? So for the dependents, you can only bring your husband or your wife, your spouse, your unmarried partner, or your children below the age of 18 years. So these are the only people you can bring into the UK. You can bring them in on your dependent visa. So if you are we are going to discuss all about dependent visa in this video. If you are interested, stay tuned. My name is Saima Nadeem. I'm trained from Pakistan. I'm a trained nurse from Pakistan, currently working in the UK as a nurse. So today video we are going to discuss about tier 2 dependent visas. What are the documents we need for a dependent visa? If you want to apply for somebody to come over to join you here in the UK as your dependent, what are the documents you need? What are the documents you need on hand before you apply for visa? All we are going to discuss in this video. If you are interested in this topic, stay tuned. A lot of people ask me a question that can they bring their sister, can they bring their brother or their parents, or any other family member, sister-in-law, brother-in-law? So the answer is no, you cannot. On the dependent visa, you are only allowed to bring your spouse, your children, or your partner, okay, whether it's a same-sex partner or straight. Okay, so that's you need to know that who is your dependent before you apply for anybody. For the other persons, like your other relatives, your brother, sister, parents, the category is different visas you can apply. Now we need to know under the dependent visa what is the validity, what is the validity of their visa. So if my visa, if I'm going to ask my husband to come over to join me here in the UK, he will come as dependent and his visa will be same as mine. He will be tier 2 dependent visa and the validity will be the same. Let's say my visa expiring in 2023 April, his visa will expire on the same day, same time, same date. And your visa should be your visa, okay, take my example. If as I said, I want to apply for my husband to come and join me here, so my visa should be valid for at least 6 months before I can apply for his dependent visa. So my visa should not be expiring like in 2 months or 1 month. It should be valid for at least 6 months before I can apply for his visa to come over. So these are the things you need to know for the dependent visa. Now we're gonna discuss what are the documents that we need for a dependent, guys. So to avoid rejections, to avoid rejection of your visa, make sure that you have all the documents in hand before you apply for visa, because a lot of people make this mistake. They start with the process and then they don't have the documents and then they apply for the documents. Meanwhile, the rest of the documents gets expired. As nurses on tier 2 dependent or on tier 2 skilled worker visa or tier 2 dependent visa, it's a plus point that most of the times you will not get a refusal for the dependent visa if you have all the documents included, if you have provided all the documents that are required and they are valid, legible, and they are not like bogus or anything. So if you provide all the information that is required, you make your case strong, there is no way that they're gonna refuse your visa. But it's totally depends on you, how you present your case, how you submit your documents, whether the documents that you provide are not expired, they scanned properly, or the file is properly submitted to them within the time limits. So we are going to discuss each and every document here. The first thing that you need is passport. Passport should be valid for at least 6 months of your dependent as well. The second thing you need is, of course, your marriage certificate if you are married. If you are if they are your civil partner or something, then you need to provide the documents as well. So for the married couples, that you need to provide the marriage certificate. And for the marriage certificate, make sure that it is attested from the Foreign Affairs Ministry, because if it's not attested, they're not going to accept it. Like it will be only local marriage certificate, like from Pakistan, it will be only on your local area.
So when it's verified from the foreign ministry, then only they're gonna recognize it. And also we need to make sure that it should be in English. If it's in Urdu, then you need to translate it. You need to make a new one or get a translated one as well. So this is the thing for the marriage certificate. It should be verified from the foreign ministry, and it should be in English. The third thing is my certificate of sponsorship. Like if you for the person who is asking someone to come, who's calling the dependents to come over, the certificate of sponsorship of that person should be attached in the documents. The fourth thing you need is the TB certificate, same as you need for Tier 2 visa. For dependents also, they need the TB certificate. And the next thing we need is the proof of accommodation. So for the proof of accommodation, you can give them your address, your utility bills, or any other bill, bank statement, or gas bill, any bill that is under your name. You can provide that as a proof of your accommodation, or your tenancy agreement. You can give your tenancy agreement as well as the proof of your accommodation. When I applied for my husband, I didn't have any accommodation, so I was living in the hospital provided accommodation, in the free accommodation that hospital gives you for 3 months. So that was the time I applied for my husband visa as dependent, but I didn't have any accommodation. So what I did, I asked my HR department to give me a letter stating that this person is employed here, and then they are living in this flat, and they will be responsible for their dependent, for their, they are going to financially support the person who's coming over. So I got that letter from the HR department. I submitted that letter, and that helped maybe. And the second thing I want to discuss here is, if you don't have accommodation, I also wrote a letter stating that this is my name, I live in the hospital provided accommodation, this is my certificate of sponsorship, I am a nurse, I'm working here in this hospital, and my joining date was this, and this is my BRP, my visa. Like they can see all the documents in your file, right, when you give them your details. So in that letter I wrote that my name is this, all the details about me, and then I said I'm a nurse here currently working, my wage is this, I'm happy to financially support my husband, and then he will be having no problem living here without any job or something like that. Like you are just saying that you will be responsible for the person you are calling in, okay? And then also you need to mention that I didn't have accommodation, so I needed to tell them that I am looking for accommodation. I don't have currently any accommodation, but I am looking for the house or a flat, and then as soon when my husband will come, probably I'll be able to accommodate him into the new accommodation. So far as of now, I don't have any accommodation, but I'm currently looking for it. So that was the letter I wrote, and then I submitted it in the application, and within few days I got his visa. Like I think within a week I got his visa. So when you submit all the documents, all the required documents, only 4 or 5 things that you need to include, when you submit each and everything, there is no way that they're gonna refuse your visa, your dependence visa. So we also need to know what is the fees for the dependent visa. So for the visa, you are going to pay around 460 464 to 60 466 64 to 66. So this is the visa fee for the dependent visa, 460. And same is for your visa. When you apply for your visa, Tier 2 and Tier 2 dependent is the same fees. And you need to remember that you need to pay for the immigration health surcharge as well. So you need to know that what is the fees, current fees of the immigration health surcharge. So also you need to pay for the immigration health surcharge, which is around 624 per year. So you are going to apply for 3 years visa. As for Tier 2 visa, it's 3 years validity, right? So you need to apply for dependent also gets the same visa, 3 years visa. So you're going to pay for immigration health surcharge for 3 years, so 624 per year.
So you need to make sure that you have that funds before you apply for it. When I applied, due to COVID, it was all free. I didn't pay for the immigration health surcharge, but now maybe the rules are changed. You may have to pay for the immigration health surcharge. I think it's been changed already. Now, for my viewers who watch my videos in Urdu or Hindi, I'm going to translate all the video. ओके सो आज की वीडियो में हमने बात की कि टायर 2 डिपेंडेंट वीज़ा के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब टायर 2 डिपेंडेंट पे हमने जो डिपेंडेंट के लिए हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि डिपेंडेंट हमारा है कौन, हम किसको बुला सकते हैं। सो एज अ डिपेंडेंट यू आर ऑन, आप जो है सिर्फ अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को या अपने पार्टनर को, उनका अनमैरिड पार्टनर को, सिर्फ इन तीनों को बुला सकते हो। अब बच्चों में से जो आपके लेस देन 18 ईयर्स ओल्ड, आप उनको बस बुला सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि आप डिपेंडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप कौन है जो जिसको आप अपने वीज़े पे बुला सकते हो। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि मैं अपने भाई को, बहन को या माँ बाप को बुलाना चाहती हूँ, बट यू नीड टू नो दैट यू आर नॉट अलाउड टू, आप उनको नहीं बुला सकते एज अ डिपेंडेंट। और जो वीज़ा है, जैसे विजिट वीज़ा हो गया या फैमिली वीज़ा हो गया या कोई भी वीज़े हैं और तरह के, उन पे आप बुला सकते हो, पर एज अ डिपेंडेंट आप अपनी दूसरे फैमिली मेम्बर्स को नहीं बुला सकते। ओके इसके लिए जो हमें डिपेंडेंट वीज़ा के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो है आपका पासपोर्ट चाहिए, डिपेंडेंट का टीबी सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। और जो है हमें मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। मैरिज सर्टिफिकेट जो मैंने बात की कि इंग्लिश में ट्रांसलेशन में होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए। अगर उर्दू में है तो आपको पता होना चाहिए कि आपने उसको ट्रांसलेट कराना है। और जो है फॉरेन अफेयर से अटेस्टेशन भी लाजमी है मैरिज सर्टिफिकेट की, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ हमें क्या चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप चाहिए। जैसे मैं अप्लाई करती हूँ अपने डिपेंडेंट के लिए, अपने हस्बैंड के लिए या बच्चों के लिए, तो मुझे अपना सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप अटैच करना है डिपेंडेंट की एप्लीकेशन में। और नेक्स्ट जो हमें चाहिए अकोमोडेशन, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन। अब उसके अकोमोडेशन का प्रूफ देने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। हम जो है अपना टेनेंसी एग्रीमेंट अपलोड कर सकते हैं, यूटिलिटी बिल्स अपलोड कर सकते हैं, गैस का या बिजली का जो भी बिल आपके नाम पे है वो आप सबमिट कर सकते हैं, जस्ट टू प्रूव दैट कि ये जो है बंदा इस जगह पे रह रहा है, अपनी अकोमोडेशन का प्रूफ देने के लिए। फॉर टू प्रूव दैट फाइनेंशियली तौर पे देखने के लिए कि आपके पास क्या फंड्स हैं, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट भी दे सकते हैं ताकि आपका जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ ना हो। अगर ये आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो आपका वीज़ा बिल्कुल रिफ्यूज़ नहीं होगा। और वैलिडिटी इन सारे डॉक्यूमेंट्स की सही होनी चाहिए। और आपके डिपेंडेंट का जो वीज़ा है वो 3 साल का लगता है। जैसे आपका जो वीज़ा है टायर 2 का 3 साल का होता है, इसी तरह डिपेंडेंट का वीज़ा भी 3 साल का लगता है। अब वीज़े की फ़ीस जो है 464 उसकी फ़ीस है। आपके डिपेंडेंट की भी वही फ़ीस होगी, वो आपने फ़ीस पे करनी है। इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज पे करना है, जो कि जिसकी बिना पे आपके जो हस्बैंड है, आपका जो डिपेंडेंट है, उनको फ्री मेडिकल मिलता है। हेल्थ सरचार्ज इसका मतलब यही होता है कि जब वो यहाँ पे होते हैं उनको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं हेल्थ के लिए। इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज इसका मतलब यही है। तो जो है 624 पर ईयर है। 3 साल के हिसाब से आपका कुछ 1800 पाउंड कुछ जो है इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज पे करना पड़ता है आपको अपने डिपेंडेंट के लिए। अब जो है आप अपने बच्चों के लिए अप्लाई करते हैं, लेट्स से कि आपके 2 बच्चे हैं, आप बच्चों के लिए अप्लाई करते हैं, 1800 उनका इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज हो गया, वीज़ा फीस होगी। और हस्बैंड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपने सारे फंड्स जो हैं कैलकुलेट करके अपने माइंड में कैलकुलेट करके लिख लें, ठीक है। और मेक श्योर कि आपके पास ये सारे फंड्स हैं जब आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई करने से पहले, ठीक है। जो यही सारे डॉक्यूमेंट्स आपके डिपेंडेंट के लिए चाहिए होता है। अगर जब मैंने अप्लाई किया था तो मेरे पास अकोमोडेशन नहीं थी, तो मैंने क्या किया कि HR से लेटर लिया कि उन्होंने मुझे लेटर दिया, उस पर लिखा ये था कि ये बंदा जो है यहाँ पे काम कर रहा है, शी इज़ वर्किंग हियर, और जो है शी इज़ हैप्पी टू सपोर्ट फाइनेंशली, कि अपने हस्बैंड को ये फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बंदा यहाँ पे काम कर रहा है, हमारे इस हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है, और जो है इतनी देर तक इसका वैलिड है। कि मतलब प्रूफ यही है, मतलब उनके लेटर लिखने का मतलब यही है कि ये बंदा जो है वैलिड है,
वैलिड है। तो ये जो है वैलिड नहीं है मतलब कि ये बंदा ओरिजिनल ही है, यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे जॉब कर रहा है, हमारे हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है, इतनी इसकी सैलरी है, और जो है ये फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता है अपनी फैमिली मेम्बर्स को, अपने डिपेंडेंट्स को। अगर ये किसी को बुलाता है तो ये फैमिली उनको सपोर्ट कर सकता है। ये इसका एम्प्लॉय नंबर है। तो वो आपको लेटर दे देते हैं। अगर आप उनको कहते हो ना मेंटेनेंस लेटर दे दो, तो वो आपको लेटर दे देते हैं। तो अगर आपके पास अकोमोडेशन नहीं है, आप उनसे ये लेटर ले सकते हैं। सेकंड थिंग जो मैंने की थी, मैंने एक लेटर लिखा था यूके वीआई वालों को, जिसमें मैंने सब कुछ लिखा था कि मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ, मैं एक नर्स हूँ, और जो है ये मेरी सैलरी स्लिप, इतनी मेरी सैलरी है पर एनम, और जो है इस डेट से मैं यहाँ पे आई हुई हूँ। अभी मेरे पास अकोमोडेशन नहीं है, बट आई एम करंटली लुकिंग फॉर वन। मैं जो है अकोमोडेशन के लिए अकोमोडेशन ढूंढ रही हूँ। तो जब मेरे हस्बैंड आएंगे, आई विल मेक श्योर कि उनके आने से पहले मेरे पास अकोमोडेशन अवेलेबल हो। ये मैंने लेटर लिखा था यूकेवीआई वालों को। तो इसके अलावा मैंने अकोमोडेशन का कोई प्रूफ नहीं दिया था, ना तो मेरे पास जो है टेनेंसी एग्रीमेंट था, ना मेरे पास जो कोई यूटिलिटी बिल था, ना ही मेरे पास कोई गैस का या इलेक्ट्रिसिटी का बिल था उस टाइम पे, क्योंकि मैं हॉस्पिटल के अकोमोडेशन में रह रही थी। तो आई हैड लाइक नो डॉक्यूमेंटेशन, कोई मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे उस टाइम पे। तो मैंने दोनों लेटर लगाए थे, एक जो मैंने एचआर से लिया था और एक जो मैंने खुद लिया था एज अकोमोडेशन प्रूफ। तो और इसके अलावा आपको जो है अपनी सैलरी स्लिप भी दिखानी है, सैलरी स्लिप, अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है इंक्लूड करनी है डॉक्यूमेंट्स में। यही 4-5 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपको डिपेंडेंट वीज़ा के लिए चाहिए होते हैं। और जो है जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं और जो है स्कैन अच्छे से स्कैन करके अपलोड करते हो, आप खुद भी कर सकते हो, वीएफएस वालों से भी करा सकते हो। लेकिन जब आप वीएफएस वालों से कराते हो तो उसकी फ़ीस होती है जो कि आपको पे करनी पड़ती है। इट्स नॉट डिफिकल्ट, यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ, ऑनेस्टली आप खुद से कर सकते हो। तो डिपेंडेंट वीज़ा के लिए यही सारे डॉक्यूमेंट्स थे, यही सब कुछ हमने डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो, किसी चीज़ में मुश्किल आ रही है, या आप मूव करना चाहते हो वीज़ा के हिसाब से या नर्सिंग की जॉब्स के हिसाब से, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प एनीवन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।